Assalamu alaikum. In this video lecture, we will be discussing about subject-verb agreement. So our first rule for today is rule number 18. Rule number 18 quotes, when two singular nouns are joined by an and preceded by each and every, then verb will be singular. For example, first of all, you need to understand that how the structure is being made. पहला आपने एक each लिखना है और एक every लिखना है, ठीक है? Each के साथ भी आपका एक verb सब्जेक्ट आएगा और every के साथ भी. जैसे पहले एग्जाम्पल में each के साथ student है और every के साथ teacher है. अब आपने क्या करना है, इन दोनों phrases को every student और every teacher को एक कंजंक्शन से ज्वाइन कर देना जो कि and है, ठीक है? तो every student and every teacher. अगर आपके पास कुछ इस तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है ना, तो उसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगा, जो कि इस केस में भी है, जो कि was है. इसी तरह दूसरी एग्जांपल देखें, every girl and every boy is reading book. Then it's rule number 19, which quotes that noun phrase is followed by a singular verb. Early to bed is good saying, ठीक है? Again, to win a prize is my ambition. Again यहाँ पर early to bed and to win a prize दोनों की दोनों चीजें आपके पास noun phrases हैं, तो उसके बाद आपने singular verb ही लगाना है. Then it's rule number 19, which basically quotes when the gerunds are the subjects of the sentence, they require the singular verb. पहले तो आपको पता होना चाहिए what is gerund. Gerund is the ing form of the verb which is being used as a noun. For example, swim जो है वो verb है, उसका ing form होगा swimming. अब मैं swimming को अगर as a noun use करना शुरू कर देती हूँ ना, तो मैं उसको gerund कहूँगी. जैसे कि इस sentence में है swimming was difficult, तो यहाँ पर swimming as a noun use हुआ है, तो इस वजह से हमने swimming को gerund बोला है. इसी तरह seeing is believing, ठीक है? तो again seeing जो है वो यहाँ पर gerund है, तो gerund हमेशा अपने साथ जो है वो singular verb ही लेता है. Reading requires focus and cooking is fun, ठीक है? तो ये सारी बातें clear हो. Then there is rule number 20, which quotes that when a plural noun mentions some quantity or amount as a whole, then the verb is singular, ठीक है? इसके लिए couple of examples हैं आपके सामने. कहते the 50 rupees he paid me was not enough. 50 rupees एक single amount है, इसके साथ आपने was use किया. 40 yards is a good distance. 50 minutes is allowed to each speaker. 50,000 rupees is a large sum. 10 kilometers is a long walk. 3 parts of the business is left for me to do. इन सारी एग्जाम्पल्स में जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, ये एक सिंगल अमाउंट, सिंगल क्वांटिटी, सिंगल एंटिटी को बता रहे हैं, तो इसके साथ आपको सिंगुलर वर्ब ही यूज करना है. Then there is rule number 21, which basically quotes that hyphenate all the compound numbers from 21 to 99. ये आपका जनरल रूल है. वैसे तो ये जो है ना आपको पता है योगी बात, बट स्टिल टू reinforce it, 21 से लेकर 99 तक अगर कोई भी वर्ड जो है वो सेंटेंस में आता है, तो आपने इसके साथ हाइफन जरूर यूज करना है, ठीक है? फॉर एग्जांपल 43 पीपल वर इंजर्ड इन द बॉम्ब ब्लास्ट. यहाँ पर 40 और 3 के बीच में आपको हाइफन नजर आ रहा है. Then the last rule is rule number 22, which quotes that hyphenate all the written down fractions. For example, we recovered 2/3 of the cash, 1/2 is slightly less than 5/8, and I remember 2/3 of the school. तो इसमें जितने भी फ्रैक्शंस हैं उनके सबके साथ आपने देखें हाइफिनेशन जो है ना वो यूज जरूर की हुई है. So this is all for today. Thank you so much. With this our subject verb agreement gets completed. इंशाल्लाह बाकी वीडियोस हम बाकी टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे. Thank you so much.